स्केल अप आईटी कंपनीज है और कुछ 60+ आईटी कंपनीज यहाँ लोकेटेड है। सो ये और इसके बाद पीछे जो एयरफोर्स के अपने तमाम R&D सेटअप्स हैं वो यहाँ लोकेटेड है। सो तमाम इकोसिस्टम यहाँ एक टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश हो रही है ताकि यहाँ पे आईटी और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज ग्रो कर सके। सो NICAT is one part of NESTEP and NICAT is a public private partnership. This is funded by Ministry of IT. Ignite जो उनका इदारा है, Ignite and NESTEP इन दोनों का joint venture है NICAT, and NICAT is being operated by a consortium जो कि नेटसोल टेक्नोलॉजीज, एयर यूनिवर्सिटी, PSC कामरा और इनोवेटर्स गैराज, ये चार मिलके इसको रन कर रहे हैं। एंड वी एक्टिवली लुक आउट टू पार्टनर्स लाइक CXO फोरम, ताकि जब एक्सपर्ट्स आप जैसे यहाँ पे आएंगे और वो स्टार्टअप्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, दैट्स वेयर द मैजिक इज। इन इंटरेक्शन से नेटवर्क बने, उन नेटवर्क से फिर रिलेशनशिप्स बने और उन रिलेशनशिप से फिर ट्रांजैक्शंस हो अल्टीमेटली। सो दैट्स द गोल। और आज हम सर आपके साथ बैठ के इंटरेक्टिव इसी पे बात करेंगे कि आईटी इनोवेशन, इसमें चैलेंजेस क्या है और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। सो प्लीज़ गिव अ गुड राउंड ऑफ अप्लॉज मिस्टर राज। Sir, I'm interactive now, let's go so that I can ask you questions. Mic. Hello. 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 Let's go 1, 2, 3. So थोड़ा सा जैसे आपने कहा था, मैं भी अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. So I graduated in computer science in '99, and then I was my first major and significant role was with NADRA. So I was one of the pioneer team members where we started National Database and Registration Authority. So I have major contribution in the design of ID card system which everyone carries, and then eventually the passport system and the data warehouse. And one significant
contribution which I have done towards NADRA is the live data acquisition centers, where you go and give your data in a conversation with the agents. That is something which was designed and implemented by my team, and that's where we started. And so that is one of the contribution which I feel is significant to the country. So I worked with NADRA for about 7-8 years, and then so then I So I worked with NADRA for 6-7 years, and then I left for England. So I went there, worked at Imperial College London for about 7-8 years. Came back and joined PIA. So I was CIO PIA for some time, and then came to Engro. It's been 3 years now with Engro. I have worked, as I said, in identity management and data warehousing company as NADRA, and then in the education industry with Imperial, and with aviation, and now in manufacturing. I have worked on, starting from NADRA, I worked on many different technologies. Main thing which is relevant and important for any CIO or any technology leader today is that you bring technology into your company where it has impact for the business, right? So at many times we as technology leaders fail to understand that we need to bring in solutions which have impact on the business, which have value on the business. Technology is very shiny, and we get excited and we say, let's implement new technology and bring all these things, talk about new technologies and blockchain and AI and all that. Important thing is that we need to keep in mind whatever technology solution we are bringing, if it has impact for the business, only then it will work, and only then it will be successful. So whenever you look for a technology solution, or look for a product, or look for a technology to implement in your company, the important thing is you look at its value, and only then it will get traction from the business. And so that's something which I feel is key. I'm very happy listening to your introduction, what the work you guys are doing here. I feel that I just want to comment on where you said that technology is a low-hanging fruit, and we have skills so that we can easily move this forward. My comment around that is that the first thing I think we need to accept and understand is that there is a lot of work needs to be done in developing skills and capabilities of people. We have 25,000-30,000 technology graduates which come out of universities every year, but are they all employable? Do they have all skills and capabilities which are needed today for them to come to the industry and start working? I think there is a gap there. So technology startups and if you want to grow a technology company, I think it's a lot of hard work. It's not a low-hanging fruit. It needs a lot of patience, it needs a lot of skills, capabilities. Why I'm so happy coming here is that you are providing that platform to people where people can come and upskill and learn and experiment and fail and succeed. And so this is why I feel that this is a very important setup. Okay. Thank you very much, sir. This is really the whole idea behind and the vision behind this thing.
that we provide youth an opportunity where they can experiment with their ideas, but at the same time learn from experts like you. It's not easy. Building a business is not easy in any part of the world. But that's where the bigger reward is. Then it's your choice that you want to live a very average life or you want to do something amazing in life. If you want to achieve any bigger goal in your life, you have to put in a lot of energy, whether it's business or anything else. सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए जो यहाँ पे और जो ऑनलाइन हमारे स्टार्टअप्स उनके लिए कि एंग्रो टेक्नोलॉजी में किस तरह का काम कर रहा है और आप उसको किस तरह से लीड कर रहे हैं, सो दैट वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट एंग्रो. सो देखिए एंग्रो, you know, it's a big corporate, right? And Engro has many businesses and many business lines, not only one business. So there are many business lines. Engro is in energy business, is in tower co business, which is telecommunication, and also the flagship company of Engro is Engro Fertilizers, and then there's chemical business, and then there's LNG and terminal business. So there are different business lines. So Engro really has operational excellence in all the businesses where Engro is involved. So Engro decided a few years ago that we now need to leverage on the technology. We have operational excellence in most of our almost all of our businesses. How can we take that next step? How can we grow this further? So Engro decided that we need to leverage on technology. We need to leverage on latest technologies and whatever is available in that field out there. And also one of the goals was to focus on innovation, right? And from there, the first thing was let's build a foundation, let's build a platform. So and the journey really started towards getting to Industry 4.0. So moving towards Industry 4.0 is a goal and a target, but of course it's a long journey. So started from where we can build a foundation of reliable infrastructure, foundation of reliable core functional system. So implemented SAP technology, where brought all businesses and companies onto one SAP platform, so that the functional layer is there, so they are all unified on one platform. We can then leverage on other Industry 4.0 technologies. The data will be available on one single platform, and from there you can utilize the data and look at analytics and all that. So looking at the infrastructure, bringing the infrastructure footprint together, and then moving it another Industry 4.0 technology, which is cloud computing. So moving majority of our workloads towards cloud, and the plan for the rest as well, with a roadmap to have a cloud first strategy. So that and the functional layer in terms of SAP. Once the foundation and the base layer is there, then building on top of it in terms of making a data strategy, in terms of moving forward, in terms of using data analytics for decision making in most of our businesses, and then adopting other Industry 4.0 technologies, like we spoke about drones. So we are a manufacturing concern, so in manufacturing there are a lot of manual functions still, where there's manual work involved. With the introduction of drones, and where the drone technology, industrial drone technology, can help in terms of thickness monitoring, for example, visual inspection of your plant equipment. So that is where we're looking at adoption of
of industrial drones. So these are the things which we are taking forward. मैं एक्चुअली थोड़ा सेल्फिश भी हो रहा हूँ सर अपने स्टार्टअप्स के लिए. मैं इसी तरफ डिस्कशन को लेके जाना चाह रहा था. फौजी फर्टिलाइज़र ने रहीम खान ने एक ड्रोन्स का पूरा एक इंस्टीट्यूट बनाया ड्रोन के लिए, बिकॉज आपका अभी बहुत बड़ा वर्टिकल है फर्टिलाइज़र. अब फर्टिलाइज़र के थ्रू आप फार्मर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, तो ड्रोन्स जो है वो एग्रीकल्चर में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं. हमारा ही स्टार्टअप है कलाम फॉर सोल्यूशन, ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं बहुत सारे फार्मर्स के साथ. को 4000 एकड़ से ज़्यादा पे वो स्प्रेइंग कर चुके हैं. इसी तरह वो बैंक ऑफ पंजाब के साथ जो मॉनिटरिंग है सोलर फार्म्स की, उस पर भी काम कर रहा है. सो एंग्रो के पास भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन्स कैन बी यूज्ड. एक तो ये डायरेक्ट है, और सेकंड फार्मर्स के साथ भी आप इस पे काम कर सकते हैं. मैं तो ये शायद एंड पे जाके सजेशन देनी चाहिए थी, लेकिन अभी मैंने तो कि अगर आप ड्रोन्स को प्रमोट करें, ड्रोन स्टार्टअप्स को, तो वो आपकी वैल्यू चेन के अंदर डायरेक्टली आपको भी बेनिफिट करेंगे और आपके जो कस्टमर्स हैं, पार्टनर्स हैं लाइक फार्मर्स, उनको भी करेंगे. हम ऑलरेडी ड्रोन टेक्नोलॉजी, तो मैंने आपको बताया कि हम हमारे 2-3 डिफरेंट बिजनेसेस में ऑलरेडी उसके अडॉप्शन पे काम कर रहे हैं. एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू डिस्कवरी ऑफ यूजिंग ड्रोन्स इन द इंडस्ट्रियल ड्रोन्स इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. इट्स ऑलरेडी there and we're looking at it, we're working on this, and we're working with 1 or 2 companies who are then coming in and doing a POC with us so that we can then adopt this technology and move forward. Yeah, will be great sir अगर आप रिक्वायरमेंट्स हमसे भी शेयर करें. रेज़्यूमे अगर आप सुन रही हैं या बाद में सुनेंगी तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. जितने भी ड्रोन के स्टार्टअप्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. सारा हमें ये करना चाहिए कि हम जो हमारा ड्रोन का पोर्टफोलियो है सारा वो सर से शेयर करें हम और ताकि ये आप सर उनको वैल्यूएट कर सकते हैं. अब अगर हम डिस्कशन को सर आगे बढ़ाएं, पोस्ट कोरोना किस तरह से दुनिया चेंज हुई है और इसमें इनोवेशन और आईटी किस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं? देखिए, पहले तो पोस्ट कोरोना से की बजाय कोरोना की बात करें तो ड्यूरिंग कोविड पाकिस्तान में बहुत आप समझ लें कि डिजिटल रेवोल्यूशन आई. अराउंड द वर्ल्ड तो ऑलरेडी फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स एंड यूज़ ऑफ ऑनलाइन टूल्स फॉर मीटिंग्स एंड कोलैबोरेशन तो पहले बहुत ज़्यादा था. बट इन आवर कंट्री व्हेन I mean work from home there was no concept of work from home in our country. When COVID hit, there was no choice, everything was locked. So during the lockdown, people started working from home. A lot of digital technologies came in, and there was reliance on digital for all companies. This also helped in terms of moving digital agenda forward in the companies. Generally in Pakistan, you struggle, digital or CIO struggle to get traction in the boards and stuff, but that helped move the digital agenda forward in the companies. People saw that this work from home and flexible working hours, this works, and during COVID the productivity actually went up instead of going down. So then this new future of work or the hybrid working is now there, and now companies understand that people can also work from home. It's not a holiday, they're working, right? So that COVID helped in terms of that, and also helped in accelerating digital transformation of companies. Now post-COVID scenario, work environment looks like quite flexible. It's a hybrid working environment. In any given meeting, there are people on site and there are people online, right? So it's really working now, and work from home is a concept. Online collaboration tools is a concept, and that online collaboration tools have really increased the productivity of people, right? Because you are not dependent on physical meetings, right? So that has really helped, and especially in the new generation, the millennials and the Gen Zs, they like flexible working environment. As long as they are producing work, it's fine, and the companies have now started to adopt that. So I think that really is
is helped COVID. बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर जो आपने हाईलाइट किया कि अब बड़ी कॉर्पोरेट्स जो हैं उन्होंने तो अडॉप्ट कर लिए हैं। स्टार्टअप्स जो जनरली यंगर लोग हैं, हमारे पास स्टार्टअप्स के अंदर फुल स्पेक्ट्रम है। लाइक वी हैव पीपल विद नो हेयर एंड ग्रे हेयर फ्रॉम पीपल विद चाइनी हेयर्स, तो पूरा एज का स्पेक्ट्रम है हमारे पास उसके अंदर, मेजॉरिटी यंगर लोग हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे वर्क फ्लोज को डिजिटाइज करना और उसके अंदर प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज आता है। कॉर्पोरेट जो है ना वो जो प्रोडक्टिविटी स्टार्टअप पुल कर सकता है वो जनरली स्टार्टअप्स कॉर्पोरेट्स कैन ओनली ड्रीम ऑफ। तो अगर आप गेम ही इसी पे जीतते हैं, स्टार्टअप गेम ही इसी चीज़ पे जीतता है कि दे कैन परफॉर्म 20x 10x ऑफ द कॉर्पोरेट साइज, वो अपने से 10 गुना बड़ी या 20 गुना बड़ी टीम को हराते हैं, और वो प्रोडक्टिविटी है, और वो प्रोडक्टिविटी डिजिटल वर्क फ्लो से एनेबल होती है। तो जो सर अगर आप इसमें द नीड फॉर बिल्डिंग डिजिटल वर्क फ्लोज इसको ज़रा एम्फेसिस डाल सकते हैं। So again, the important thing which you just mentioned is that why startup concept or a startup culture or a startup mindset. You can also bring startup mindset in your corporate. And so this why the startup mindset is important and helps is because in startup it's so major issue with big corporations and big companies, the businesses which are running for years and years, is that there is a lot of inertia, right? It's very difficult to change the processes. There are three things we talk about mostly. We say, okay, there is people, there's process, there's technology, right? So technology, although it's very challenging, it's there are new technologies coming every day. You have to stay abreast of the things which are happening. But still, I feel out of these three, technology is the easiest part. You can bring in technology, you can implement solutions and stuff. But what is more important is people and process. If you work on your processes to optimize them, to bring innovation in your processes, and you work on people to change the mindset, that is where you can bring the value of innovation into your company. And the startup ecosystem has that. Startup ecosystem are willing and are open to new ways of working, are open to new processes, are open to adopting the new innovation. So the people and the process part, which is very difficult in big companies and corporates, if they adopt startup mindset, then it really accelerates the digital transformation. All we do in our companies is implement technology and say we have done digital transformation. But the actual transformation starts once you've implemented technology. Then you have to look at how you optimize your processes and how you change the mindset of people. Absolutely. Startup is a mindset. It's not a stage of your journey. ठीक है, हम उसको अर्ली स्टेज ऑफ बिजनेस को, एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस को स्टार्टअप कहते हैं, बट इट्स अ माइंडसेट। एप्पल एक $1 ट्रिलियन कंपनी होने के बावजूद आज भी एक स्टार्टअप माइंडसेट के साथ ऑपरेट करते हैं। वो आज भी कहते हैं कि हम एक स्टार्टअप हैं। Amazon is a $1 ट्रिलियन कंपनी, लेकिन वो आज भी कहते हैं डे वन पहले दिन आज ही हम शुरू कर रहे हैं। सो इट्स अ माइंडसेट। ये सबने जो बात की, स्टार्टअप्स को रियलाइज ये करना है आपके लिए कि मैं सर की बात को अगर आपके लिए रीएम्फसाइज करूँ कि इट्स अ माइंडसेट, लेट्स स्टिक विद इट। और जो पीपल, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी, सर अब एंग्रो के CIO कहने कि टेक्नोलॉजी इज लीस्ट, मैं कहूँगा आसान है, सबसे आसान है, बट द पीपल एंड द प्रोसेसेस इज द डिफिकल्ट पार्ट। यू नीड टू हैव राइट पीपल इन योर स्टार्टअप। अच्छे लोग लाएं अपनी कोर टीम के अंदर और अच्छे प्रोसेसेस बनाएं, दैट वुड एनेबल यू टू विन द गेम। अब कोई भी स्टार्टअप है, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर है, ये फंडामेंटल्स नहीं बदलेंगे। और टेक्नोलॉजी आप आजकल अडॉप्ट करना बड़ा आसान हो गया है। पोस्ट कोरोना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पूरी दुनिया में एक्सेलरेट हो गई है, डिजिटल टूल्स बहुत एक्सेसिबल हो गए हैं, डिजिटल टूल्स इवॉल्व बहुत ज़्यादा करके, बट गेट द फंडामेंटल्स राइट।
So thank you very much. Should we take some questions? Questions भी लेते हैं. If there is any question we can take. नहीं तो मेरे पास बहुत सारे हैं. जी ये क्वेश्चन कोई भी पूछना चाहे. So देखिए Web3 of course is something where there is no central control, right? It's a decentralized web, and you have technology again for that. Technology is there. How then you make it relevant to the business, right? So I think we were looking at a use case, and we're still pursuing that. We're looking at a use case of how we can use Web3 or blockchain technology in our supply chain processes. Because, so the supply chain processes we are trying to we are looking at if that use case is relevant for our Web3 and blockchain technologies. So the essence of Web3 is that there's no central control, and it's out there, it's in anyone's hands, and the central control which is implemented by authorities, Web3 is is not in that sphere, which is the real benefit of Web3. बहुत सारे स्टार्टअप से अक्सर पूछना क्या करते हैं, कहते हैं हम एक ऐप है. You are not an app. You are the business model. And app is just a channel. इसी तरह Web3 is just a channel, by the way. Don't try to do innovation with Web3. Mr. Sir ने कहा ना, try to find a use case कि end customer को क्या benefit होएगा, right? साथ भाई बैठे यहाँ बहुत एंड पे ये कंपनी रन करते हैं क्वालिटी सॉल्यूशंस के नाम से. क्वालिटी सॉल्यूशंस 3D प्रिंटिंग एंड 3D स्कैनिंग में काम करती है. ये फैक्ट्री है, उसको स्कैन कर सकते हैं और उसका डिजिटल ट्विन बन जाता है. वो भी मेटावर्स है. वो बहुत पहले से कर रहे हैं, 15-20 साल से, जब मेटावर्स वर्ड इन्वेंट ही नहीं हुआ था. ठीक है, डिजिटल ट्विन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं बहुत सारी, स्पेशली कंस्ट्रक्शन के अंदर पहले से ही. वो एक यूज केस है कहना. सो ट्राई टू थिंक ऑफ ए यूज केस, बेनिफिट टू द पीपल, और उसके ऊपर टेक्नोलॉजी डालें. अगेन पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी से शुरू मत करें. वर्क विद कस्टमर एक्सपीरियंस. बस यही हज़रत स्टीव जॉब्स ने यही फरमाया. सर साथ भी प्लीज. Exploring the value, and so once we have value discovery and we see there is value in different areas, then you can bring digital twin for certain areas of those plants. So certainly, so as I said earlier, we are looking at adoption of Industry 4.0 technologies
IoT is one of them, simulations, drones, cloud technology, data transformation, digital twins of course is part of that, and we are on that journey. In terms of innovation is one of the key value of Engro. When we started this digital transformation 2 years ago, innovation was one of the key value, and innovation is of course focused on how you improve your processes, how you improve your way of working. How much success we have achieved is still, the jury is out there, but we are on that journey. Mapping processes in different areas, for example, mapping HR processes, mapping processes in supply chain, mapping processes in commercial, and say how can we improve them, how much automation we can bring in those processes. So it's a journey, it's still there, it's a long road ahead. Technology we have implemented, as I said earlier, we have implemented waste technology. Now we're looking at process improvement, and then looking at how we can change the mindsets of people so that we adopt the new ways of working. Just for example, how difficult is some people's attitude in local working environment and culture against adopting new processes and against the status quo? So we spoke about this earlier. Change management is very difficult, especially for big companies, and the companies where set processes are there for years, for decades. Right? It's very, very difficult. The only way which I have found to make this successful is to show people value. If you show value in terms of, if you change a process, if you improve a process, if you show the people that if you adopt this new improved process, there will be a value for you, there will be better outcomes in terms of your objectives, there will be time saving, things like that. If you show value, definitely there will be an adoption on new ways of working. I think we can take one more question. one last question. There is one from another person. Please. We couldn't go ahead and say anything directly. So they wanted to know if Aries is doing work on computer vision and drone technology. We have done a proof of concept with Engro, and it has been received well by our Engro management. Okay, how long does Engro take in finalizing collaborating arrangements after a successful proof of concept? Yeah. So as I said earlier, on the drones we are doing proof of concepts, as you've already seen. On computer vision, we are also there are one or two areas where we're looking to have some implementation of computer vision. For example, we are thinking to bring computer vision in terms of using it for surveillance, use it for that. Just to answer the question, as I've already said, we are looking at value discovery of these technologies as proof of concept has been completed, as said by one of the participants in this conversation. We are looking to move forward with drones in one or two use cases. There is a strategy. We are working on it, and we will move these things forward. AMX, अब हम सर अज़हर को डायरेक्टली ना रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को ज़रा थोड़ा सा एक्सुलेट करवा दे. इट्स गुड दैट एंग्रो जैसी बड़ी कंपनी अगर एवेलुएट कर रही है, that's a sizable transformation within Pakistani business community. With this, sir, really grateful. ये पहला इंटरेक्शन हमारा, बट दिस इज़ नॉट द लास्ट. अभी तो पार्टी शुरू हुई है. अभी हम चाहेंगे आप बार बार हमारे पास विजिट करें. हमारे स्टार्टअप से नेक्स्ट टाइम हम ये प्लान करेंगे कि 1-to-1 आपके सेशन इनसे रखें, सो दैट यू लर्न कि ये क्या कर रहे हैं एंड एडवाइस देम कि किस तरह से उसको बेहतर कर रहे हैं. थैंक
अभी एक दो इंगेजमेंट्स हम ऐसे कर रहे हैं डिफरेंट कंपनीज के साथ, जिसमें कि स्किल डेवलपमेंट और इन चीज़ों पे काम हो रहा है। एक आध यूनिवर्सिटी के साथ हम बात कर रहे हैं, वी कैन हेल्प दिस सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट। वी आर ओपन टू वर्किंग with startups. It's never a zero sum game. It's learning for both. Right? So we will learn from them, they learn from us, and we, as an ecosystem, we will move forward. So we are open to that. इसमें एक मेरी सजेशन है सर कि हम सेक्सो के साथ मिलकर ना हम उसे कहते हैं मीटअप काला, कि हम एक ही दिन में सारे स्टार्टअप्स को कहेंगे ये अपना स्टॉल्स लगाएं यहाँ पे। सब वो हम वही करना चाहिए भाई, आई एम विद यू ऑन दिस कि हम स्टार्टअप्स को कहें और बाहर से भी इनवाइट कर लेंगे और स्टार्टअप्स लाइक 25, 30, 40 स्टार्टअप्स यहाँ शोकेस करें अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज, और इंडस्ट्री से हम एक ही दिन में ज़्यादा सारे लोगों को इनवाइट करें, लाइक 30-40 इंडस्ट्री लीडर्स डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में। लेट्स से हम 4-5 घंटे की एक्टिविटी प्लान करते हैं, 1 घंटे में सर आ रहे हैं, अगले घंटे में और लोग। बिजनेस दे सकते हैं एब्सोल्युटली, कोलैबोरेशन। हमारा तो मैं तो स्टार्टअप्स को यही कहता हूँ और फिर बार बार कह रहा हूँ, माई रोल इज आई एम योर बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्रिंग टू मी योर प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग बिजनेस डेवलपमेंट। इस वक्त जिस स्टेज पे आप हैं, आप सबको बिजनेस डेवलपमेंट में हेल्प चाहिए, एंड दिस इज माई एफर्ट कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिंकेजेस प्रोवाइड करें, एंड यू नो कहाँ से हेल्प मिल जाएगी। और थैंक यू वेरी मच अनज़र, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अनज़र। सर 1 मिनट आपको और रुकना है सर, लेकिन तो अप्रिसिएशन ये आपको नाइका याद दिलाएगा।